Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my channel Oxford Learning, and today we are going to discuss about the Crusades. Chapter number 3 is the Muslim Dynasties, page number 50 to 53, and we will discuss about the SLO based preparation for the examination, that how you can just make easy this topic for you and you can just write down all the answers of unknown questions. So let's start it and we will find what is exactly the crusade. सबसे पहली बात तो ये है कि क्रूसेड्स है क्या चीज़। क्रूसेड्स को उर्दू में कहते हैं सलीबी जंगें। सलीब क्या चीज़ है? आपको पता है क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए सलीब सबसे ज़्यादा सीक्रेट साइन है, जिसको बहुत ज़्यादा मुक़द्दस माना जाता है, क्योंकि क्रूसिफिकेशन इज़ अ प्रोसेस व्हेन द पीपल पुट द जीसस ऑन द फॉर द क्रूसिफिकेशन। हज़रत ईसा को जब सलीब पे चढ़ाया गया था तो उस वक्त से ये टर्म जो है वो हमारे सामने आती है। तो क्रूसेड्स जो थी वो सलीबी जंगें थी। सलीबी जंगें का मतलब ये है कि किसके दरमियान में हुई थी? मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस के दरमियान में हुई थी। लेकिन क्रिश्चियंस, आपको पता है कि पूरी वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा रिलीजियस तौर पे, रिलीजली यू कैन से द पावरफुल हैं, वो सबसे ज़्यादा क्रिश्चियंस पाए जाते हैं। क्रिश्चियंस जो हैं वो यूरोप से लेके तमाम आगे जितने भी कॉन्टिनेंट्स आप फाइंड आउट करेंगे, उन सब में आपको क्रिश्चियंस की जो तादाद है वो ज़्यादा मिलेगी। इसकी एक ख़ास रीज़न है, क्योंकि क्रिश्चियनिटी इज़ एन ओल्ड रिलीजन और आज क्रिश्चियंस की 6 मुख्तलिफ सेक्ट्स मौजूद हैं। ज़ातें आप कह सकते हैं या इनके डिफरेंट फ़िरके कह सकते हैं जो सेक्ट्स हैं, और उनमें जो सबसे ओल्ड कहलाया जाता है दैट इज़ रोमन कैथोलिक। और रोमन कैथोलिक के बारे में एक बात जो मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस में बताई है कि दे आर बैप्टाइज्ड, जो मैंने हिटलर की स्टोरी में भी बताई थी, बिकॉज हिटलर वाज आल्सो द रोमन कैथोलिक एंड ही बिलोंग्ड टू द रोमन कैथोलिक एंड ही वाज बैप्टाइज्ड। तो बैप्टाइजेशन के बाद जो भी इस जो है वो इसमें ऐड होता है, उसको रोमन कैथोलिक के जो तौर पे इनका मतलब रूल है, ये दिस इज़ द रूल। तो क्रूसेड्स जो थी वो जंगें वो किस तरीके से शुरू हुई, क्या इसकी हिस्ट्री है, वो हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे अबाउट द क्रूसेड्स कि कौन थे, किस तरीके से आए और क्या हुआ। सबसे पहली बात ये है कि ये कोई एक जंग नहीं है। हमारी बुक में जो है वो ओनली 5 जो वॉर्स हैं उनके बारे में, 5 क्रूसेड्स के बारे जिक्र किया गया है, जबकि ये टोटल 9 जंगें लड़ी गई थी। और आप इसको कह सकते हैं कि ये एक सीरीज़ थी, ये कंप्लीट सीरीज़ थी, एक के बाद एक और दूसरी। और सबसे बड़ी बात क्या थी कि ये इसका एजेंडा क्या था? क्रूसेड्स का एजेंडा सिर्फ मजहबी लड़ाई नहीं था, बहुत सारे रिलीजियस पर्पस थे इसके अलावा इकोनॉमिक पीरियड जो इकोनॉमिक रीजंस थी, और बहुत सारी ऐसी रीजंस थी जो हम आगे जाके बयान करेंगे। कुछ रीजंस मैं आपको बताऊंगी। तो यू कैन से इट्स अ सीरीज ऑफ रिलीजियस वॉर्स बिटवीन क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड एंड इनिशिएटेड बाय द पॉप अर्बन II। किसने शुरू की थी? पॉप अर्बन II ने की थी। पपाया रोम जिसको कहते हैं, रोम का आपको पता है कि बहेरा रोम, मेडिटेरेनियन की जब हम बात करते हैं तो वी हैव द 2 पोर्शंस ऑफ मेडिटेरेनियन। नंबर 1 इज़ अ वेस्टर्न साइड एंड नंबर 2 इज़ अ ईस्टर्न साइड। तो ये दोनों साइड्स जो हैं इसकी मौजूद हैं। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो मसीही थे वो समझते थे कि जो फ़लस्तीन है वो इनका एरिया है, क्योंकि वो हज़रत ईसा का जाए पैदाइश है, और इसके अलावा जेरूसलम और बहुत सारी जगहों पर इनके मुक़द्दस मकामात मौजूद हैं। लेकिन उस वक्त वहाँ पर मुसलमानों का कब्ज़ा था, जो बात उनसे बर्दाश्त नहीं हुई थी। तो जिस तरीके से ये 9 जंगें लड़ी गई और इनमें जितने लाखों लोगों का कत्ल हुआ, इवन के यूरोप के जितने भी बड़े बड़े कंट्रीज़ थे जैसे कि इटली, जर्मनी, फ्रांस, और उसमें जितने भी यहूदी थे उन सब को एक इस तरीके से मजहबी तौर पे उनको ब्लैकमेल किया गया, और उनको इस तरीके से जो था वो जंग लड़ने के लिए ऐसे इमोशनल किया गया कि वो सब जो थे वो मैदान में एक साथ आ गए थे। और इसकी जो बात कह सकते हैं कि हम लोग वहाँ पे जो एक नाम ज़ाहिर होता है वो पीटर राहब जो था, उसके जो ताल्लुकात थे वो इस्लामी इलाकों पर कब्ज़ा करने के बाद वो समझता था कि जो इस्लामी इलाके हैं उन पे कब्ज़ा करने के बाद हालात हमारे बेहतर हो सकते हैं, और उसके ताल्लुकात जो थे वो यहूदियों के साथ थे। और जो यहूदी थे उनका जो मेन एजेंडा था वो ये था कि फ़लस्तीन में बहुत ज़्यादा और सब इम्पॉर्टेंट ज़खायर हैं, बहुत सारे वहाँ से बिजनेसेस हो सकते हैं, बहुत सारी तिजारत हो सकती है। सो दैट इज़ वाई
बेसिक पर्पस रिलीजन नहीं था। रिलीजन की आड़ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो क्रूसेड्स में हुई, जिनको जो है वो एक सिर्फ ढाल बनाया गया रिलीजन को, एक जो सलीब के नाम पर वो सलीब लेके आते थे और उसके उसके साथ जंग, मतलब उसको इमोशनल करने के लिए, किसी को भी इमोशनल करने के लिए आप रिलीजियस मेथडोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं, आप रिलीजियस थॉट्स को प्रोवोक कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें इसमें शामिल थी। सबसे पहले तो ये चीज़ थी कि ईसाइयों और मुसलमानों के दरमियान में हुई थी। दूसरा, सलीबी जंगें, इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने सलीब को ढाल बनाया था मजहबी तौर पे कि ये हमारा इलाका है तो ये हमारे पास होना चाहिए, सो दैट इज़ वाई दिस वाज द रीज़न। और इसके बाद ये जो फ़लस्तीन है वो शुरू से मुसलमानों और मुसलमानों के लिए भी और ईसाइयों के लिए भी मुक़द्दस रहा है। जैसे कि आज अगर हम बात करें तो हमारे ननकाना साहब में बहुत सारे सिख आते हैं, दे विज़िट देयर हॉली प्लेसेस, और उनकी जो प्रोटेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो गवर्नमेंट की है, और गवर्नमेंट उनको फुल प्रोटेक्शन के साथ साथ उनको बहुत अच्छा प्रोटोकॉल भी देती है। इवन दे वेलकम देम व्हेन दे अराइव देयर। इसी तरह से जो ईसाई थे, जो यूरोप के क्रिश्चियंस थे, वो वहाँ से आते थे एज अ ज़ायरीन, एज अ विज़िटर, वो वहाँ पे विज़िट करने के लिए आते थे। और आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि उनकी जो ट्रेडिशंस थी उनमें चेंजेस आना शुरू हो गई। किस तरह से, जैसे कि मुसलमानों के लिए भी एक मुक़द्दस मकाम है और उनके लिए भी बहुत ज़्यादा वो था कि लाइक ये हमारे भी यहाँ पे हज़रत जीसस की जो है वो प्लेस है, और जीसस हमारे लिए भी उतने ही मुकद्दम हैं जितने के क्रिश्चियंस के लिए थे। अब क्या होता था कि जब वो इटली, फ्रांस, इंग्लैंड के जो यहूदी थे, वो जो विज़िट करने आते थे, क्रिश्चियंस थे वहाँ के, जो जब विज़िट करने आते थे, उनके जो थे वो तौर तरीके वो मुस्लिम्स को अच्छे नहीं लगते थे, क्योंकि वो डांसिंग करके, म्यूज़िक बजा के, और तरह तरह के म्यूज़िक थे जो उन्होंने ईजाद किए हुए थे, वो बजाते हुए जाते थे। तो ये चीज़ें मुसलमानों ने कहा कि सिर्फ आप इखलाकियात का ख्याल करें, थोड़ा सा इखलाकी तौर पे जो है ना ये चीज़ें सूटेबल नहीं हैं। तो आप जिस तरह से विज़िट करते हैं, ये मुक़द्दस मकामात हैं, तो आप इनके ऊपर जब विज़िट करते हैं तो आप उनका ख्याल करें। अब हुआ क्या, वो जो यहूदी थे, वो जो क्रिश्चियंस थे, जब वो वापस यूरोप जाते हैं तो वो बहुत ही उल्टी सीधी कहानियाँ बनाते हैं कि मुसलमान जो हैं वो हमें हमारे मुक़द्दस मकामात पर जाने से रोक रहे हैं और हमारे साथ बदतमीज़ी करते हैं। लाइक हम वहाँ जाते हैं तो हमें मिसट्रीट किया जाता है। तो ये कहानियाँ उन्होंने यूरोप के मसीहियों को जाकर सुनाई, और वहाँ बहुत ज़्यादा तादाद में जो यूरोप के मसीही थे, जैसे कि इटली, फ्रांस और इंग्लैंड के लोग जो थे, वो कहते हैं कि ठीक है, अगर मुसलमान जो हैं वो इस टाइम तादाद में कम हैं और इलाका भी उनके पास है, तो क्या ऐसा नहीं कर सकते हम कि हम सारे ईसाई मिलकर इनके ऊपर हमला करें और हमारे जो इलाके हैं जहाँ पे हम विज़िट करने जाते हैं हम अपने कब्ज़े में ले लें, ताकि हम जिस तरीके से चाहें हम कब्ज़ा कर सकते हैं, हम यही चले जाएं इस तरह से। अब सबसे बड़ी बात ये थी उस टाइम पे कि जो वहाँ पे विज़िट करने के लिए आते थे, उनके माइंड में एक चीज़ होती थी कि जो भी फ़लस्तीन जाएगा, जेरूसलम जाएगा, वहाँ जो विज़िट करेगा उसको बहुत आला मुकाम मिलेगा मरने के बाद, जैसे जन्नत की बात करते हैं हम लोग। जबकि जो जीसस के मानने वाले हैं, या जीसस ने जो प्रीचिंग दी है, उसमें जन्नत का जिक्र कभी नहीं आया। अगर स्पिरिचुअली हम इस आर्टिकल को पढ़ें, स्पिरिचुअली इस चीज़ को जानेंगे, तो हमें पता चलेगा कि जीसस ने कभी भी जन्नत दोज़ख का जिक्र नहीं किया था। खैर, ये एक अलग टॉपिक है। तो वो कहते थे कि जो भी इन इलाकों में जाएगा, जो भी इन जगहों पे विज़िट करेगा, उनको जो है वो जन्नत मिलेगी। और लेकिन वो करते क्या थे, वो शराब पीते थे, नाचते गाते थे जब भी वो आते थे उन जगहों पे। तो वो जो हरकतें थी वो फिर मुसलमानों को जो है वो नहीं बर्दाश्त होती थी। और मैंने जैसे पहले बताया कि वो रीज़न्स उन्होंने सिर्फ मजहबी एक आड़ में देखा कि इलाका जो है वो बहुत ज़्यादा, एक तो इकॉनमी की जो है, इकॉनमिक जो उनके पॉइंट्स हैं वो उनके माइंड में थे, और सेकेंडली जो जगह थी वो ये था कि यूरोप जो था उसको बहुत बेनिफिट मिलने वाला था इन इलाकों से। तो और दूसरे ये मतलब ये था कि इसके बाद उन्होंने क्या किया, बीच में जो रीज़न्स थी वो तो बहुत सारी हो जाती हैं, लेकिन उन्होंने किया कि जो बैतुल मक़दस है उसको हम आज़ाद करा लें मुसलमानों से। इसके लिए हमें मुत्तहिद होना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने ये की थी कि जो भी इन जंगों में हमारा साथ देगा, मतलब जो पर्सन भी आएगा, जो भी जंग लड़ेगा ना, वो पर्सन जो है उसको एक तो बहुत अच्छा मुकाम मिलेगा और उसके तमाम गुनाह जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे इन जंगों के लड़ने के बाद। और अगर उनके वो ज़िंदा भी बच जाता है तो हम उसको इतना इनाम देंगे कि उसकी सोच से कहीं ज़्यादा इनाम दिया जाएगा।
इस चीज़ ने जो था ना इन सबको इकट्ठा किया और इन्होंने ये जंगों का आगाज़ शुरू कर दिया। और उनमें सबसे जो आगे था वो उस पॉप का जिक्र करते हैं हम लोग अभी आगे चल के, मैं आपको बताती हूँ कंटेंडर्स क्या थे, रीजंस क्या थी, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। तो क्रूसेडर एक टर्म यूज़ होती है। क्रूसेडर वो लोग थे जो सलीब लेके आते थे और तलवारों से लोगों को कत्ल करते थे सलीब की आड़ में। तो इस तरह से जो थे वो जंगजू थे, जो वहाँ के जंगजू थे उनको क्रूसेड्स बोलते थे वो लोग, क्रूसेडर्स। तो क्रूसेडर्स जो थे वो सलीबी जंगजू को कहते थे, जो कि बहुत ही सेक्रेड माना जाता था कि वो एक बहुत ही अच्छे पर्पज़ के लिए जंग लड़ रहा है। तो ये, और उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं थोड़ी सी कि टोटल क्रूसेड्स कितनी हुई हैं। हमारी बुक में जो है वो 5 का जिक्र किया गया है। 5 का जिक्र इसलिए किया गया है कि 9 वॉर्स को उसके अंदर सम अप कर दिया गया है। यहाँ मैं बात करूँगी फर्स्ट क्रूसेड की, पहली सलीबी जंग कब शुरू हुई थी। मैं डिटेल में नहीं जाऊँगी इस वजह से कि बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं बाद में, तो वो फिर किसी दिन इंशाल्लाह ताला आई विल मेक अ वीडियो। फर्स्ट क्रूसेड जो था वो 1096 एंड 1099 तक जो थी वो ख़त्म हो गई। सेकंड जो थी 1147 से 1149, थर्ड 1189 से 1192 एंड फोर्थ क्रूसेड 1202 से 1204, फिफ्थ क्रूसेड 1218 से 1221, सिक्स क्रूसेड 1228 से 1229, सेवन्थ क्रूसेड 1248 से 1249, एट्थ क्रूसेड थी 1217 टू 1271 और नाइन्थ क्रूसेड थी 1271 टू 1272। लेकिन इन जंगों का जो इख्तिताम है वो हमारी बुक के मुताबिक 1289 में लिखा हुआ है, बट अकॉर्डिंग टू द विकी इट्स 1291। तो यू विल फॉलो द बुक एज़ यू लाइक, बट द रियलिटी इज़ ये जंगें जो ख़त्म हुई थी वो 1291 में हुई थी। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं थोड़ा सा अपने इसको, मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल में इसमें नहीं जाएंगे बिकॉज मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। इसमें थोड़ा सा क्रूसेड वर रिलीजियस वॉर सैंक्शनड बाय रोमन कैथोलिक church in the medieval period, and these wars were fought during the 1095 AD to 1492 AD. Roman Catholic Church launched military expeditions from the Europe to Palestine to reclaim Holy Land from the Muslims. The fighting between the Muslim and Crusaders took place in the area of present-day Palestine, Lebanon, Syria and Egypt. यहाँ पर सबसे पहली जो है सैंक्शनड का मतलब होता है कि मंजूर शुदा, किसी चीज़ से मंजूर शुदा एक चीज़, जैसे रोमन कैथोलिक्स से मंजूर शुदा थी। और उसके बाद मेडिवल पीरियड करून वस्ता का दौर, उसमें भी मैंने करून वस्ता के ऊपर भी मैंने एक वीडियो डाली हुई है, उसके ऊपर आप देख सकते हैं। रिक्लेम्ड का मतलब है कि दोबारा से दावा करना। और उसके बाद नेक्स्ट में हम चले जाते हैं कि नेक्स्ट क्या चीज़ है हमारे पास। Do you know, the Holy Land is a term which is used by Muslims, Christians and Jews to refer as a Palestinian territory. वो जो इलाका था फ़लस्तीन का, that territory was the Holy Land for Muslims, Christians and Jew equally. Western Jordan and the part of southern Lebanon and of southwestern Syria, among all places in Holy Jerusalem. Holy Land Jerusalem in Palestine is important because of many religious historical sites such as Masjid Aqsa. फिर उसके बाद आते हैं contenders of Crusades। तो जो हैं इसमें हम ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ इसकी सारी स्टोरी बेसिकली, तो हम सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आगे भी डिस्कस करेंगे। मुतनाज़ा होता है कंटेंडर्स ऑफ क्रूसेड्स एंड आउटकम्स ऑफ द क्रूसेड, रीजंस क्या थी और उसके बाद उसके रिजल्ट्स क्या थे। द क्रूसेड्स 1096 AD to 1102 AD वर इनिशिएटेड का मतलब होता है स्टार्ट हुए बाय पॉप अर्बन II। पॉप अर्बन जो पपाया रूम अर्बन जो थे, टू दोम, फिर सोएम भी आए, बहुत सारे लोग आए। इन ऑर्डर टू एड द क्रिश्चियंस Byzantine Empire against Muslim Seljuk Turks who were ruling in the Holy Land at that time. यहाँ पर कुछ जिक्र किया गया है क्रूसेड्स का। अकॉर्डिंग टू द बुक वी विल सी फर्स्ट क्रूसेड 1096 and 10 to 1099. Crusaders came from the different western regions. On the call of Pope Urban II, Muslim Seljuk Turk Crusaders won many battles and occupied the Holy Land. Second Crusades 1147 to 1149, and European king the Louis VII and
Conrad III, Muslims were led by the Seljuk general Nuruddin Zangi. The Muslims won control of the Holy Land at that second May. Third Crusade, 1189 to 1192, the Frederick King Philip, Augustus of France, King Richard I of the England, Muslim side included Nuruddin Zangi's forces, led by his military general Salahuddin Ayyubi. And after that, the Third Crusade result, the truce that left Jerusalem under Muslims' dominion but allowed Christians access for trading and visit. Fourth Crusade is a 1202 to 1204. Pope Innocent III, Ayyubi Sultans, Crusaders captured Constantinople and divided Byzantine among themselves. Byzantine Empire was weakened due to the power struggle between the European and Byzantium emperor. Fifth Crusades, 1208 to 1289. Pope Innocent III, King Frederick II of Prussia, Germany का एक इलाके को कहते हैं, Louis IX of the France, and Edward I of the England Mamluk. Crusaders were defeated by, let me highlight this, Mamluks. The Crusaders states in the Middle East also fell in Muslim hands. यहाँ पर एक आपको जो है मेडिटरेनियन बहुत ज़्यादा क्लियर नज़र आएगा, और यहाँ पे थोड़ी सी आपको एक you can say division you can see here, एंड आप देख सकते हैं ये कितने इलाकों में फैली हुई जंग थी, एंड किस तरीके से जो था वो तबाह किया था. लंदन तक जो थे, जितने भी यहूदी थे उनको कॉल किया गया था, जितने भी क्रिश्चियंस थे उनको कॉल किया गया था टू सिक्योर एंड टू कैप्चर द होली लैंड ऑफ पैलेस्टाइन. द क्रूसेड्स, यहाँ पर उन्होंने डेट लिखी हुई 1289. आप अपनी बुक की लिखना चाहें तो यू कैन राइट इट, बट द रियल डेट इज़ 1291. यू कैन चेक द विकी. Salahuddin Ayyubi कौन था? Salahuddin Ayyubi, born in 1173 AD in Tikrit, Iraq. He was in service of Imaduddin Zangi, who made him commander of his troops. Salahuddin Ayyubi, the hero of many battles, faced the Crusader for about 20 years. Ultimately, he pushed back the holy forces of Europe, which had come to the capture Holy Land of Jerusalem in Palestine. And the world has hardly witnessed a brave, fearless yet human conqueror like Salahuddin Ayyubi. Then, effects क्या हुए थे उसके? The end of the Crusade marked the end of the Roman Empire and the re-establishment of Muslim rule over the entire region. European contact with the culture of the Eastern Mediterranean grew. Crusaders brought back Asian goods, resulting in increased trade of spices, fur, cloths, sugarcane, rice, and everything. So you can read it as well, because we are just going to get the essence for the SLO based preparation. So here some many causes. I have just entered some causes. What were the causes of the Crusades? सलीबी जंगों की जो वजूहात थी वो क्या थी? रिलीजियस ज़ील, एक मजहबी जज्बे के तहत. क्रिश्चियंस यूरोप was driven by religious fervor to reclaim the Holy Land, particularly Jerusalem, which had been under Muslim control. फिर उसके बाद political motive था. Political motive में क्या चीज़ आ सकती है? It can be the government, and then economic incentives. इकोनॉमिक के हिसाब से बहुत ज़्यादा रास्ते मिल रहे थे उनको ट्रेड के, न्यू मार्केट्स वहाँ पे वो बनाना चाहते थे. सोशल अनरेस्ट, ओवर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई थी यूरोप में, जिसकी वजह से उनका जो था कि वो किसी ऐसी जगह पे चले जाएं. सोशल अनरेस्ट की बात है. हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट विद मुस्लिम्स, ongoing clashes between Christian and Muslims, and along the beliefs in the need of protect Christians, pilgrims, and the Holy Land fueled in Crusades. ये कुछ रीज़न्स हैं हमारे पास जो कि मजहबी भी आती हैं, जिसमें सियासी चीज़ें भी हैं, जिसमें इकोनॉमिक की बातें कर सकते हैं हम लोग. सोशल अनरेस्ट है, कॉन्फ्लिक्ट विद मुस्लिम्स हैं. तो ये तमाम जो कॉजेज़ हैं क्रूसेड्स के, ये लिटिल बिट आप कह सकते हैं डिटेल्स में जो है वो आप और भी फाइंड आउट कर सकते हैं, बट आई थिंक ये काफ़ी हैं. उसके बाद मैंने कुछ क्वेश्चंस रेडी किए जो कि कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस हैं, एंड यू विल फाइंड आउट एवरीथिंग इन ऑल दिस. व्हाट वाज द चिल्ड्रन क्रूसेड? What happened to the participants? Children Crusade were a popular religion movement in the 1212
involving the young people who intend peacefully convert Muslim in Holy Land. It ended in tragedy, with many participants being sold into the slavery. What were the some major consequences of Crusades for Europe and Middle East? The Crusades led to increased cultural exchange in the introduction of new goods and the spread of ideas between the Europe and the Middle East. They also left the legacy of religious tension and conflicts. How did the Crusade impact trade and cultural exchange between the Europe and the Middle East? The Crusades facilitated increased trade and cultural exchange, introducing Europe to new products, ideas and technology from the Middle East. What is the significance of the Crusades in modern times? The Crusades have left a lasting historical and cultural legacy, influencing the collective memory and perception of the East-West relationship, particularly in the context of religious conflict and the idea of holy war. Who was Salahuddin and what role did he play in the Crusades? Salahuddin was a Muslim military leader who recaptured Jerusalem from Crusades in 1187, leading to the Third Crusades. What were the outcomes of the Fourth Crusades? You can find out, you can write down the outcomes of the one, third, second, third, fourth as well. So the Fourth Crusade जो थी वो मुसलमानों के लिए एक बहुत ही एक you can say it was the victory for the Muslims, sacking of the Constantinople, the capital of the Byzantine Empire, rather than the achieving its intended goal of reaching the Holy Land. What were the major crusade states established in the Holy Land? The major crusade states include the Kingdom of Jerusalem, country of Tripoli, Principality of Antioch, and country of Edessa. What was the main goal of Crusades? The main goal of the Crusade was recapture the Holy Land, particularly Jerusalem, from Muslim control. It's really easy answer, you can do that. Who called for the first crusade? किसने कॉल किया था? And Pope Urban II called for the first time first crusade in 1095 at the Council of Clermont. What did the first crusade begin? The first crusade began in 1096 and concluded in 1099 with the capture of Jerusalem by the crusade. एक बहुत ही short and precise answer आप मिल सकता है यहाँ से. थैंक यू सो मच. दिस इज़ ऑल अबाउट द क्रूसेड्स. और क्रूसेड्स के बारे में जितनी भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी, अगर आप इनको कर लेते हैं, आप इनके ईयर्स याद कर लेते हैं, तो यू विल फाइंड आउट द बेस्ट रिजल्ट्स एंड यू विल जस्ट प्रोड्यूस द बेस्ट रिजल्ट्स. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द क्रूसेड्स एंड आवर नेक्स्ट topic is Ottoman Empire. So we will I will upload the video on the Ottoman Empire tomorrow inshallah ta'ala. Thank you so very much and Allah Hafiz.